Okay. So hello everyone, I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang teachings powered by Vedang Institute of Technology. So tell me, how are you everyone? केमती जाउछि तम मानकर दिन प्रिपरेशन एक्सेट्रा को स्टूडेंट्स माने टीजीटी एंड जेटी पय प्रिपेयर करूछो देन आपण माने ऑलरेडी जानि थिबे कई बैच एनरोल करि थिबे रेस्ट जो माने बैच एनरोल करि नांती दिस इज फॉर दोस TGT द्रोण बैच आपण मान नै परिबे 1499 जोटा थिला 1299 ही जाईची एंड जूनियर टीचर बैच नै परिबे जोटा 1199 थिला नाउ इट इज 999 ओनली तो 1200 एमती रहउछ आपण मानकर ऑफर प्राइस तो जल्दी जल्दी आपण माने एनरोल करि दियो ठीक अछि हेलो नाइ मो अच्छी क्लास रे रूम न रहउछ ओके वन डे एग्जामिनेशन आपण माने ऑलरेडी जानि चथि जोटा 3999 थिला महापैक रा प्राइस एटा एबे 2999 ओनली हे जाईची एंड रिस्पेक्टिव बैचेस जोटा कि आपनकर स्पेसिफिक किछि नेबा को चाहउछन जेंति सीजीएल 995 हे जाईची आरआई बैच 1299 हे जाईची पुलिस एसआई पय नेबे जदी 1299 हे जाईची कांस्टेबल बैच 785 हे जाईची प्रभात 799 हे जाईची ASO Secretariat 1599, ASO High Court 1299. Apart from all these, आपण मन को मु सजेस्ट करबी टू टेक द महापैक. नेक्स्ट देखो सिविल सर्विस पे आपण मन जानि छथि प्रीलिम एग्जामिनेशन पे आपण मन नेबा को चाहू छथि 5499 प्राइस हे जाईछि प्री प्लस मेंस जदि आपण मन नेबे 1199 सॉरी 11999 टाइप 9999 एंड ऑप्शनल बैच भी आपणकर ओनली 3999 रे अवेल करि पारिबे चलो जीवा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को तो टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहिछि देखो now what instrument is used to measure atmospheric pressure को हम मापिया पई को इंस्ट्रूमेंट को यूज करूछे that is hygrometer that is anemometer that is barometer or that is altimeter right answer quick आंसर दरकार जल्दी जल्दी आंसर दियो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चंद्रशेखर मौलिक दैट इज बारोमीटर जेते बेले भी एटमॉस्फेयर कथा कहूची बारोमीटर आपन को माइंड को आसी जाउची देन मते कहले टिके हाइग्रोमीटर कोन करूची हाइग्रोमीटर रा काम कोन ना ये मेजर करूची आपनकर ह्यूमिडिटी सो हाइग्रोमीटर H फॉर हाइग्रो H फॉर ह्यूमिडिटी को हमें रिलेट करेई परिबा कि यस और नो एंड हम जदी कहिबा केते टाइप रा हाइग्रोमीटर हैव यू एनी आईडिया अबाउट इट जय जगन्नाथ चंद्रशेखर मते कहि थाओ केते टाइप रा हाइग्रोमीटर आपण मान जानि संदि कि एयर प्रेशर पई बारोमीटर आई नो हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी वेरी गुड सो मने रखो हेयर हाइग्रोमीटर गोटे अछि एंड गोटे अछि साइक्रोमीटर टू टाइप्स रा एटा मने रखो वन इज द here hygrometer आउ गोटे अछि psychrometer ओके these are very common two types ए psychrometer रे कोन हुए ना wet and dry bulb hygrometer को इति तंकर चेक करा त wet condition रे आमे psychrometer यूज करूचे and dry condition रे आमे hair hygrometer को कंसीडर करूचे very good morning to everyone है ना देन हमें आसीबा नेक्स्ट कोन अछि ना एनीमोमीटर मते को एनीमोमीटर रा काम कोन ना वाइंड स्पीड को हमें चेक करिबा लागि विंड रा स्पीड को चेक करिबा लागि हमें यूज करूछे दैट इज एनीमोमीटर वेदर फोरकास्टिंग पई भी हमें ताको यूज करूछे जेते बेले पानी पाक सडन आपनकर चेंज होउची फोरकास्टर माने आपनकर संगे संगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करसन थ्रू यूज व्हाट ना एनीमोमीटर एंड एठी आपनकर कोन होची ना एविएशन पई भी हमें यूज करूछे विंड एनर्जी स्टडीज पई भी एविएशन पई भी हम यूज करूछे विंड रो
एनर्जी स्टडी करिबा लागि भी हम यूज करूछे एनीमोमीटर राइट बट राइट आंसर कौन कहूची ना बारोमीटर सो बारोमीटर कौन करूची ना मेजर करूची एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज द वेट ऑफ द एयर कॉलम अबव ए प्लेस तो ऊपर आपनकर जहा भी रहिबो ताको हमें कहिबा दैट इज बारोमीटर जदी पछरा गला केते टाइप्स रो बारोमीटर आपनकर अछि हैविंग एनी आईडिया द टाइप्स ऑफ बारोमीटर गोटे रहउची मर्क्यूरी बारोमीटर आउ गोटे रहउची एनेरॉयड बारोमीटर मर्क्यूरी बारोमीटर रे आपनकर सब जगह रे यूज हेई पारिबो बट एनेरॉयड बारोमीटर आपनकर लिक्विड केस रे यूज हेई पारिबो नाही तो केते टाइप रो कहिली टू टाइप्स रे मने रखि थाओ one is the mercury another is the aneroid two types रा आपनकर बारोमीटर आसी जीवो क्लियर क्लियर एनिमो ए एनेरॉयड ता आपण कहबे देयर इज नो लिक्विड यूज इज दैट क्लियर चंद्रमणि प्रधान प्रणाम आसो सो एटा मने रखो को जगह रे आपनकर यूज करूचे कोन यूनिट्स थाए आपनकर बारोमीटर्स ना एमबी मींस कोन ना मिलीबार तो एमबी होची गोटे यूनिट आउ को यूनिट रे हम करूचे एचपीए कोन होची ना हेक्टोपास्कल दैट इज एचपीए एटा को हम कहूचे हेक्टोपास्कल दीज आर द यूनिट्स कहार ना आपनकर बारोमीटर रे जेतले मपा जाय केमती डिनोट करा जाय दीज आर द यूनिट्स जय जगन्नाथ आरती क्लियर सो फॉलिंग प्रेशर हमें कहूचे दैट इज जेतेबेले आपनकर प्रेशर फॉल होउची ताको हमें कहूचे कोन ना स्टॉर्मी वेदर आसी जाउची जेतेबेले प्रेशर राइज हे जाउची हमें कहूचे क्लियर वेदर तो प्रेशर राइज हेले केतेबेले माइंड रे आसीबोनी कि स्टॉर्म आसुची बोली प्रेशर लो हेले सबबेले स्टॉर्म आसे प्रेशर राइज हेले वेदर सबबेले क्लियर थाए एति कि जिंसा फंडा क्लियर करके रखिबो एंड मते कहला अल्टीमीटर को कोन डेफिनेटली अल्टीमीटर आपन माने रिलेट करि परिबे का सहित ना अल्टीट्यूड मापिबा पई altitude means height मापिया पे हमें कहि परिबा height above the sea level ताको हमें चेक करूचे altimeter it works detecting the changes in the atmospheric pressure but it doesn't कोन आपनकर एयर प्रेशर सहित यार किछि रिलेशन नाही हमें आको कोथरे यूज करछे एयरक्राफ्ट रे यूज करूचे माउंटेनिंग टाइम रे भी हमें ताको यूज करछे माउंटेन रो हाइट मापिया पई सो ए सब को रिलेट करि परिबे प्रेशर आसिले बारोमीटर विंड आसिले एनीमोमीटर ह्यूमिडिटी आसिले हाइग्रोमीटर and आपनकर कोन एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसिले बारोमीटर इज दैट क्लियर नेक्स्ट चलो so next question in front of you tell me as altitude increases atmospheric pressure altitude जते बेले increase होउची ताको हमें कोन कहिबा क्विक increase देखो ऑप्शन कोन अछि ना increase अछि बट हम जानि छै कि atmospheric pressure depends on the weight of air column above the sea level that means हमें कौन कहि परिबा at higher altitude air density is lower होना नै खो सो एटा आपनकर altitude increase हेले atmospheric pressure decrease करिवो am I right because at higher altitude we know the air density is always lower so pressure cannot increase with the height that can decrease with the height so decrease आपनकर right answer हबो clear air becomes very thinner हमें कहि परिबा the column of air becomes shorter when we go to the upper nerves clear chalo next next mate kya lines on a weather map connecting points of equal atmospheric pressure are called jete bele lines apन को शो करूची अरे समन्विता प्रणाम गुड मॉर्निंग आसो कैलाश्री गुड मॉर्निंग को lines on a weather map connecting points of equal atmospheric pressure are called what ताको हमें कौन कहि परिबा क्विक देखो ऑप्शन फर्स्ट कोन देला तमे ना राइट आंसर टिके देला कौन कहउछो बी आइसो हाइट्स कहउछो पक्का हो आसो गोटे गोटे करके देखिबा सो दैट आपण मानकर सब ऑप्शन ऊपर टिके टिके आईडिया आसी जिवो तो आइसोथर्म्स कहले कोन बुझछो ना दीज आर आल्सो द लाइंस दैट जॉइंस द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर एठी आपण पर कहा कथा कहिछि एठी प्रेशर कथा कहिनी एठी आपण मानकु कहिछि इक्वल टेम्परेचर कथा सो टेम्परेचर आसिले आपण मानकर आंसर कोन हबो ना आइसोथर्म्स हिसिबो दैट इज यूज्ड इन द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स ओके आइसो हाइट्स कहले कोन बुझो जोटा आपण माने सब आंसर दोसोंते आइसो हाइट्स दैट मींस कोन ना इक्वल रेनफॉल
एटा आपनकर हे जिवो इक्वल रेनफॉल टाइम रे जेते बेले गोटे जगह माने किछि एरिया रे इक्वाली रेनफॉल होउची आमे मैप रे देखैबा सेथिरे आमे कोन आइसो हाइट्स रो सिंबल को कोन डिनोट करी कि देखैबा क्लियर इफ द आइसो बार्स आसी गला ताहाले हमें कहि परिबा कि द लाइन्स आर जॉइनिंग of the equal atmospheric pressure here हमें कहि परिबा the close isobars अपन को थाए माने पकांतु close isobars थाए to denote the strong rainfall हरा नहीं मते को even widely spaced isobar अपन को थाए जते बेले weak हे जाय winds ता सेते बेले अपन को कोन ना spaced isobar देखा जाय जेते बेले वीक विंड आसी जाए विंड ता जेते बेले स्टॉर्म परे वीक हे जाए सेते बेले आपन स्पेसियस वाला आइसोबार्स देखा जाए सो डिनोट करिबो आइसोबार्स विल बी द राइट आंसर क्लियर सेटा मु 2 नंबर आंसर बी देइथिली एते लेट रे त माने चालले मु केमति आंसर देछि त माने गले चेक करबी को चलो तो आइसो हेल्स कहले कोन बुझिजो ना इक्वल सनशाइन ड्यूरेशन एंड द सोलर रेडिएशन टाइम रे हमें कहिबा दैट इज द आइसो हेल्स the lines joining the places of equal sunshine like गोटिए टाइम रे सपोज 12 टा बेले को जगह रे इक्वली सनशाइन सेति के टेंपरेचर सनशाइन सेति के सोलर रेडिएशन आपन कर जाउची ताकू हमें चेक करूचे कोथरे ना आइसो हेल्स रे तो हेल्स को हमें कहि परिबा कि व्हाट ना सनशाइन सहित रिलेट करि परिबा सनशाइन सहित रिलेट करि परिबा सोलर रेडिएशन सहित हमें ताकू चेक करि परिबा यस नो am I clear very good so मन रहबा आइसोबार्स कहितली कोन प्रेशर आइसोथर्म्स कहितली कोन टेंपरेचर थर्म रु थर्मोमीटर यूज करा जाय टेंपरेचर मापिया पय राइट आइसो हाइट्स कहितली कोन रेनफॉल मापिया पय आइसो हेल्थ कोन कहितली ना आपनकर सनशाइन क्लियर एति की जिंस मन रखि दबो नेक्स्ट क्वेश्चन आसा तो आइसोथर्म्स everything have here mentioned next अरे चल ना हाँ so the standard sea level atmospheric pressure guys your answer दियो the standard sea level atmospheric pressure is approximately केते रहिबो जेते बेले गोटे स्टैंडर्ड हमें जाउछे मेजर करिबा लागि the standard sea level केते रहिबो क्विक प्रणाम सागरी केते रहिबो एटा कहि दे आंसर सागरी रे गोटे हिट आंसर आसु क्लास को एंट्री एंड राइट आंसर that is 1013 ऑप्शन ए वेरी गुड नंदी केते रहइबो 1013.25 एमबी मिलीबार त मानकू कहिथिली क्लियर सो दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर एंड आकु हमें कोउथरे सब यूज करूचे इवन आपण मान जानिथिए मेट्रोलॉजी हैला एविएशन हैला ए सबु रे हमें कोन ना याकू अप्रोक्सीमेटली यूज करू छ वेदर फोरकास्टिंग पई भी हैला जदि इक्विवेलेंट देखिबा ताहले 760 ये केते हबो 760 mm कोन मर्क्यूरी रे जीवो क्लियर एते की जिंसा मन रखि परिबो वेरी गुड चला नेक्स्ट क्वेश्चन तो हाई प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स व्हाट काइंड ऑफ वेदर हाई प्रेशर यूजुअली इंक्लूड करिवो कोटा हाई प्रेशर यूजुअली इंडिकेट व्हाट काइंड ऑफ वेदर जेते बेले प्रेशर हाई हबो त मानकू कोन कहितिली प्रेशर हाई हबो प्रेशर लो हेले सब बेले स्टॉर्म आसीबो कहितिली ह ना नाही को मने पडुछि ना नाही क्विकली को प्रेशर लो हेले स्टॉर्म्स आसीबो अरे लो प्रेशर आसी गला अरे स्टॉर्म कंडीशन आसी गला हाई प्रेशर जे बढ़ी जिवो नॉर्मल क्लियर वेदर आसीबो तो हमें कहि परिबा कि दैट इज क्लियर एंड ड्राई कौन करूछ सब आंसर दो ना कौन पई जल्दी जल्दी तो क्लियर एंड वेदर प्रेशर जेते बेले बढ़ी जिवो वेदर सेति के क्लियर हे जिवो प्रेशर जेति के कमी जिवो तो स्टॉर्म एंड वेट आपनकर केते बेले आसीबो ना लो प्रेशर रे ये आपनकर लो रु लो प्रेशर हेले आपनकर स्टॉर्म आसी जिवो जेते हाइट को जिवो सेते क्लियर एंड ड्राई आसीबो अच्छा क्लाउडी एंड ह्यूमिड कंडीशन आपन मानकर केते बेले आसीबो मते कुह क्लाउडी एंड ह्यूमिड कंडीशन केते बेले आसीबो ना जेते बेले raising हबो एयर प्रेशर the cloud formation requires a raising in air typically of the low pressure रे एयर जेते बेले रेज होउची ताकू हमें कहि परिबा that is the cloudy and humid condition
एटा एयर ऊपर डिपेंड करूची आफ्टर दैट एक्सट्रीम हीट हे गेले तो आपण माने जानि छथि जते बेले प्रेशर आपनकर बढ़ी बढ़ी जीवो हमें कोन कहूचे जल्दी देखो हीट singly alonely हमें कहि परिबानी that cannot define the pressure but high pressure can occur in both hot and the cold region both region रे हेई परिबो extremely like hot आपण माने राजस्थान को जिबे जदी हेई परिबो आपण माने जदी हिमालय को भी जाई परिबे प्रेशर आपनकर हाई हेई परिबो so there is the difference between the high माने सबटु highest and lowest difference clear next चलो मते कुआ so the equatorial low pressure belt is also known as the so equatorial कथा कहिला मते टिके आंसर देलो equatorial quick the equatorial low pressure belt is also known as what option कोन दोचो साहू आरती मधुस्मिता समन्विता जगदीश सागरी नंदिनी संतोषिनी रंजन गीतांजलि चंद्रशेखर जल्दी जल्दी क्विक 6B अच्छा जीबा आंसर को भी हमें जीबा आपण माने बी कहउछथि डोलड्रम आई नो दैट बट मते कुह व्हाट डू यू मीन बाय द हॉर्स लैटिट्यूड डू यू हैव एनी आईडिया व्हाट इज हॉर्स लैटिट्यूड एंड कोठेटा लोकेट हुए नॉर्थ और साउथ रे या फिर ईस्ट एंड वेस्ट रे तो हमें कहि परिबा कि हॉर्स लैटिट्यूड आपनकर 30 डिग्री रु 35 डिग्री रे आपनकर देखा जाए एंड एटा कोठी ना 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ रे ये देखा जाए क्लियर कोठी नॉर्थ एंड साउथ रे हमें कहि परिबा दिस इज द रीजन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ एंड साउथ को देला माने हाई प्रेशर को आपण माने पळेबे डिसेंडिंग एयर द काम विंड्स ए मानु को नै कि हमें कहि परिबा दैट कैरिंग द हॉर्सेस कोन स्टॉल्ड हियर माने ताकू ता अकॉर्डिंग निया जाइतिला नेम द हॉर्स लैटिट्यूड क्लियर तापर आसुची कोन ना डोलड्रम्स तो डोलड्रम्स हैला आपनकर राइट आंसर तो मते को डोलड्रम्स माने कोन हैविंग एनी आईडिया व्हाट इज डोलड्रम्स एटा आपण मानकर कोठी देखा जाय जेमिति त मानको कहिली हॉर्स लैटिट्यूड आपनकर नॉर्थ एंड साउथ रे देखा जाय सेमिति डोलड्रम्स आपनकर कोठी देखा जिवो ना जेहेतु इक्वेटोरियल कह जाईची इ आपनकर कोठी ना इक्वेटर रे देखा जिवो जदि केते डिग्री कहिला ना 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ रे देखा जिवो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ रे देखा जिवो एति की जिंस मन रहिला एंड ताको हम आउ कोन जानि छे ना एज अ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोली जानि छे आईटीसीजेड आपन को एग्जाम रे केबे केबे पक्के दिए व्हाट इज आईटीसीजेड एंड आईटीसीजेड आपनकर केति के टेंपरेचर रे को पोल ले एग्जिस्ट करूची जोठी आपनकर इंटेंस सोलर हीटिंग हे थाए जोठी आपनकर एयर एक्सपांड्स एयर राइजेस हे थाए दैट मींस लो प्रेशर आसे द सरफेस विंड्स वेरी काम थाए ताकू हमें कहि परिबा दैट इज रिलेटेड विथ एंड अ फ्रीक्वेंट कन्वेंशनल रेनफॉल आपनकर थाए क्लियर चलो नेक्स्ट तो मते को व्हाट इज रोरिंग 40s मते को रोरिंग 40s को हमें कोन बुझुचे ना ये आपनकर रिलेट करिवो पूरा ओनली साउथ लैटिट्यूड को ये रिलेट करिवो साउथ लैटिट्यूड दैट मींस ये केते डिग्री रे रहिवो ना 40 रु 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रे ये रहिवो बिलोंग करिवो एग्जिस्ट रहिवो 40 रु 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड सहित रहिवो वेरी स्ट्रांग वेस्टर्ली विंड या को अफेक्ट करिवो स्ट्रांग बिकॉज़ हमें कहि परिबा देयर इज नो मेजर लैंड मास और टू ऑब्स्ट्रक्ट द विंड्स किछि लैंड मासेस ही नथिबो तो आपन को ऑब्स्ट्रक्ट करिबा लागि विंड को सो ऑब्वियसली ये आपनकर इजीली फ्लो हे परिबो आफ्टर दैट मते कहिलो पोलर फ्रंट माने कोन बुझिचो एटा त आपण माने जानले रोरिंग फ्रंट आपनकर साउथ एंड लैटिट्यूड को आपण माने एग्जैक्टली बुझिले ताहाले हमें कहि परिबा रहिला कोन ना पोलर फ्रंट को हमें कोन कहि परिबा ना दैट अराउंड 60 डिग्री लैटिट्यूड बोथ साइड रो 60 डिग्री लैटिट्यूड रे आपनकर देखा जिवो पोलर फ्रंट दैट मींस पोल रे both the pole हमें कहि परिबा 60 डिग्री लैटिट्यूड रे देखा जिवो तो कोल्ड हेइखरा दरकार पोलरिस्टर साइड्स क्लियर तो दैट इज द बार्थ प्लेस ऑफ द साइक्लोन्स एंड द टेम्परेट रीजन तो ये जो पोलर फ्रंट आपनकर रहिला ये ही आपनकर कोन ना साइक्लोन को जन्म दिए am I clear yes चलो नेक्स्ट मते कहिबो horizontal movement of air from high pressure to low pressure is known as quickly कहिलो कोन कहूची जल्दी कुह horizontal movement of air from a high pressure to low pressure high to low जते बेले जीवो कोन कहितिली प्रेशर जते बेले high to low जाउची ताको हमें कोन कहूचे करंट कहिबा की
करंट आपण माने केमिति आसे कहिबे जदि करंट देखिबा ओशेनिक करंट कथा कहिबा दैट इज द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ओके कोन ओशन करेंट्स को नेके हमें कहि परिबा गल्फ स्ट्रीम को नै परिबा कोन ना इथे हमें गल्फ स्ट्रीम को एग्जांपल नै परिबा होना नै को ओशन करेंट्स को नै परिबा ओशन वाटर को नै की द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आपण स्टार्ट ही जाय कोन करंट बट एठी पछारी छी कोन ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर आसिला माने विंड सहित हमें रिलेट करिबा डी कोथि पई कन्वेक्शनल कोथि पई wind ही हबा आपनकर because आपण मान जानसंदी wind is the horizontal movement of air horizontal this is the vertical line this is the horizontal line तो wind आपनकर कोन ऊपर तळ जाय एमती फ्लो करूची ना wind आपनकर एमिति फ्लो करूची टेल मी wind आपनकर एई टाइप रो फ्लो करूची ना केते बेले wind देखिछो एमिति फ्लो करूची तो horizontal आसिला माने कोन कहइबो ना wind रो फ्लो करूची caused that the pressure gradient force by जो the reason पसारा गला that is caused by what ना pressure gradient force by am I clear बुझा पड़िला air always moves from the high pressure to the low pressure and the direction कहिबा that is influenced by आपण को जानिथिबे Coriolis force friction ए सब तार गोटे reason एटा मन रखिबो तो वर्टिकल मूवमेंट हेले ताकू हमें कहबा कन्वेक्शन जो वर्टिकल मूवमेंट आसी जीवो ना सेटा को आपण माने कहबे कन्वेक्शन बट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आसिले विंड एटा सब बेले मन रख जदी भी केते बेले पचारी देला ना वर्टिकल मूवमेंट ऑफ प्रेशर ताहाले एटा रिलेट करिवो कहा सहित कन्वेक्शन सहित अच्छा व्हाट डू यू मीन बाय द टाइड मते कहि परिबो केते बेले पीरियडिकली आपनकर वेव आसुची ओशन रे वाटर माने आसुचंती आपण माने समुद्र को जानतु बसिथिबे आपनकर ढेउ आसुची ताकू हमें कोन कहि परिबा that is the tide the periodic rise and fall of the ocean water nothing else clear that is caused by what na gravitational pull of the moon and the sun एटा आपण माने छोटो बेलु पढिथिबे कोन कहूचे ना the periodically rise and fall of ocean water and reason कोथि पई हुए ना the gravitational pull यदि gravitational pull कहिला अर्थ सहित रिलेट करिवो नाही because of the gravitational pull of what moon and sun को रिलेट करि परिबो am I clear spring tide and neap tide yes चंद्रशेखर the convection तमन को ऑलरेडी कहि देली vertical movement of air due to what due to the heating जते बेले आपनकर प्रेशर लो हे जाय प्रेशर हाई हे जाय जते बेले आपन कोन ना horizontal flow हबो that means wind हबो but the ocean भितरे water आपनकर तळे रहि जते बेले साइक्लोन आसे हीट हे जाय जते बेले आपनकर सडन वेपराइजेशन प्रोसेस को आपन माने एग्जांपल ले जंतु evaporation को नियंतु तो जते बेले आपनकर कोन हबो vertical movement हबो जते बेले हम ता कहबा that is the convection that is कोथरे responsible for thunderstorms आपनकर आसे convectional rainfall आसे ताकू हमें कहि परिबा that is what that is the convection am I clear मते लागु जी फंडामेंटल क्लियर हे जाउथबो जदी कोठी टिके डाउट रहबा मते पुनी पछाडी हैला चलो नेक्स्ट मते को व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर the deflection of winds due to the earth's rotation कोन कहै छी ना फोर्स पछाची that is responsible for deflection of winds due to the earth's rotation तो राइट आंसर कोन हबो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मु त मानको कोन कहिथिली सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल दीटा फोर्स अछि जोतरे पिला माने कंफ्यूज होती तो सेंट्रीफ्यूगल कहले कोन बुझुचो यस राइट आंसर को त हमें जिबा बट मु जोटा पचारछि आगे कहि दियो तापर हमें जिबा द कोरोलिस फोर्स एबे त मानको कहि देली होप मने रहिथिबो बट स्टिल मते कुह जते बेले आपण मानको कहूची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट मींस व्हाट ना दैट्स एक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन हमें कहि परिबा दिस इज अ सेंटर सॉरी ओके तो एठु जते बेले फोर्स ता आपनकर एक्ट होची कुआडे ना आउटवर्ड को ताहाले हमें तांको कोन कहि परिबा दैट इज सेंट्रीफ्यूगल ओके देन जते बेले एक्ट करिवो भीतर को ताकू हमें कोन कहि परिबा सॉरी पेन चेंज नकल त मन जानि परिबनी जते बेले एक्ट करिवो ये भीतर को ताकू हमें कहिबा दैट इज सेंट्रीपेटल दैट इज
सेंट्रीपेटल फोर्स एतिके तो डिफरेंस आउ कोन हाँ ना नहीं मते कुआ तो सेंट्रीफ्यूगल कहले सब बेले मन रख परिबो द एक्ट द आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन दैट इज इंपोर्टेंट कोथिरे ना सर्कुलर मोशन ने जदि आपण मान को सर्कुलर मोशन कथा कहि देला कहा कथा ना सर्कुलर मोशन कथा कहि देला दैट मींस हमें कहि परिबा कि दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जेते बेले ग्रेविटेशनल फोर्स कथा कहला गोटे गोटे आंसर को मु जाउछि हैला आरती कुआडू आसुचो एमिति काई आंसर मारुचो असो सी पुनी एको चेंज हे गला असो त ग्रेविटेशनल फोर्स कहले कोन बुझुचो त जेते बेले अर्थ ताडू को आपण करे किछि भी ऑब्जेक्ट को टाणुची आपण माने जानि थिबे जेते बेले एप्पल पकई थिले तळु को ग्रेविटेशनल पुल पई से टाणिला हन नै मते कुओ सो आमे कहि परिबा द पुल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ तो अर्थ रो पुल को आमे कहि परिबा दैट इज व्हाट द ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज द फोर्स अट्रैक्शन ऑफ अर्थ हमें कहि परिबा attraction of earth towards it yes then right answer kon it hegala na sorry the Coriolis force the Coriolis force kon kahila na that apparent force due to the earth rotation that is the Coriolis force and kothre ye effect pakaye apanଙ୍କର right in the north hemisphere apanଙ୍କର kon हुए na deflects the winds to the right in the north hemisphere and deflect करे wind कोठी ना left in the southern hemisphere जदि right आपनकर northern hemisphere रु आसे को टाइप रो एमिति ही तो बुले ना northern hemisphere this is the southern hemisphere तो कोन कहै छी ना right of the northern hemisphere that means आपनकर एमिति बुलिबो एठी के आसीबो then पुनी साउदर्न हेमिस्फीयर रु कोड जीवो ना साउदर्न हेमिस्फीयर रु लेफ्ट को जीवो सो दैट मींस पुनी एमिति जीवो तो आइदर एरो मार्क केमती करो पुनी एमिति करो ओके ताकू हमें कहि परछु दैट इज व्हाट दैट इज द कैरोलिस फोर्स am I clear circular motion हेले आपनकर आसी जीवो कोन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर एंड आपनकर कैरोलिस फोर्स आसी जीवो दैट इज द जीरो इफेक्ट एट इक्वेटर मैक्सिमम कोठ रहबो ना पोल्स रे यदि कोठी सबुटु लिस्ट पचरा गला ताहाले मन रख परिबो दिस इज जीरो at equator and maximum कोठी ना पोल रे एतिके जिंस फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी तो माने जानिछो दैट एक्ट नियर द अर्थ सरफेस आपनकर हुए रिड्यूस करे विंड रो स्पीड को एंड अल्टर करे विंड रो डायरेक्शन कोन वेरी स्लाइटली ओके गुड मॉर्निंग पंडित चलो नेक्स्ट बा मते को द हॉर्स लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड नियर व्हिच प्रेशर बेल्ट हॉर्स लैटिट्यूड आपनकर देखा जाय को प्रेशर बेल्ट रे मते कहलो क्विकली जल्दी जल्दी हॉर्स लैटिट्यूड कथा कहला इक्वेटोरियल रे आपनकर देखा जीवनी बिकॉज़ इक्वेटोरियल रे आपनकर ऑलवेज 0 डिग्री हन नै मते को इक्वेटोरियल रे वेरी लो आपनकर देखा जीवो राइजिंग एयर एंड हेवी रेनफॉल आपनकर देखा जाय सो हमें कहि परिबा कि दैट इज द सब ट्रॉपिकल हाई that means located around केमिति ए हम ऑप्शन बी तो so the sub tropical high आपनकर राइट आंसर सब पोलर लो पोलर हाई ए सब होबनी बिकॉज़ आपण मान जानि संदी सब पोलर लो आसिले कोन लोकेटेड अराउंड 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड पोलर हाई आसिले 90 डिग्री पूरा हाई को पळेबो 90 डिग्री को क्लियर एटा आसिले 60 डिग्री दिस वन इज द 90 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन मते को एयर मूव्स इन अ clockwise direction in a high pressure system clockwise direction ओके तापरे पुनी कोन होची ना जते बेले clockwise direction ने बुलुची ताको हमें एंटी साइक्लोन कहूचे इन व्हिच हेमिस्फीयर एटा को हेमिस्फीयर को नै कि हमें रिलेट करि परिबा क्विकली को साउदर्न हेमिस्फीयर रे हबो कि साउदर्न हेमिस्फीयर रे ऑलवेज आपनकर एंटी क्लॉकवाइज कोन विंड रो मूवमेंट थाए सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे जदी एंटी क्लॉकवाइज हला साउदर्न ने तले ऑब्वियसली आपनकर नॉर्दर्न रे हबो क्लॉकवाइज हन नै को so due to the Coriolis force आपन को एबे पढेली the air movement outward from the high pressure deflected to the right so हमें कहि परिबा directed clockwise direction ए टाइप रा आपन को डायरेक्शन चलीबो ए टाइप रा डायरेक्शन चलीबो क्लियर चलो नेक्स्ट तो मते कुह which winds blow constantly from the subtropical high to the equatorial low subtropical high to the equatorial low हमें कहा को रिलेट करे परिबा क्विक
which winds blow constantly from the subtropical high to the equatorial low. Westerlies को हमें कौन कहि परिबा ना subtropical high to subpolar low को हमें कहि परिबा कि westerlies. Yes or no रे मते आंसर दियो. No, because this is कौन blow from the subtropical high to subpolar low. ये subtropical high रू subpolar low को आसीबो. Am I clear? Clear or not? Then आपनकर polar easterlies को हमें कौन कहूचे? That is the polar high pressure or like belt रे आपनकर देखा को मिले. That means ये भी आपनकर कोठी कि सब polar low को पड़ेबो. तो trade winds, that is the only one. Trade winds ही हमें कहि परिबा, that is the only one. Subtropical high रू equatorial low को से आसीबो, जोटा को ITCZ zone बोली हमें कहूचे. Northern trade winds, northern hemisphere, southern trade wind, southern hemisphere. So that is the right answer as the trade winds. Clear? Next Rasta. So this is how it done. The trade winds, also known as the tropical easterlies, are the permanent prevailing winds that blow from the subtropical high pressure belt towards the equatorial low pressure. Okay. The northern sphere is northeasterly trade, southern sphere is southern easterly trades. But एमाने सबु कोठी की ना tropical convergence zone ITCZ आडको flow करंती. You can have a look here. Next इबा मते यार आंसर कुह जल्दी आरती. The roaring 40s refers to, तो माने को कहितली roaring 40s माने कोन, but the roaring 40s refers to what? एबे मते जल्दी आंसर दरकार. Quick. The roaring 40s tropical cyclone तो बिल्कुल नुह, because roaring 40s कहिछि माने आपण माने करो ये तो पळे आसिला 5 डिग्री रु 30 डिग्री भितरे. तो रहिला कोटा ऑप्शन वेरी गुड, जोटा आपनकर 40 डिग्री रु 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रहउची सेटा ही हबो, because ये आपनकर कोठे रहउची ना 40 डिग्री टू 50 डिग्री. Am I clear? चलो नेक्स्ट. मते कुह a local wind that blows from the sea toward the land during the day is called what? A local wind that blows from sea toward the land during the day is called what? ताको हमें कौन कहि परिबा local wind को? Anyone? जल्दी. अरे obviously sea breeze कहिबा. कौन कहि परिबा ना sea breeze कहिबा, because that occur during the daytime only and the land heat faster than the sea. सेथि लागि आपनकर हेई पारे. and कौन क्रिएट करे ना low pressure over the land, सेथि पे आपनकर फ्लो पूरा स्पीड रे हुए. and wind flows from the sea आपनकर केमिति हुए ना high pressure to the low pressure. that is very common in the coastal areas. एतिकी जिंस क्लियर. वेरी गुड. and land breeze कहले आपण माने समस्त सबोल भाबिबो जते बेले देखिबो कि land रे हुए, that means the land breeze हेथिबो. but land breeze आपनकर that occurs in the night. ये आपनकर night period रे हुए, day रे हुए नाही. and what is anabatic wind? have you ever heard the word anabatic? मते को अनाबेला सुनिथिबो, मूवी भी देखिथिबो, but anabatic wind केरे सुनिछ कि जते बेले आपनकर ऑफ स्लोप विंड आसे माउंटेन रेंज रु डे टाइम रे आपण माने देखिथिबे गोटे माउंटेन एरिया रे हिली रीजन रे आपण माने देखिथिबे माउंटेन आडू गोटे पूरा ठंडा ठंडा पवन बोहि के आसे. दैट इज द ऑफ स्लोप विंड को हमें कहूची. कोन ऑफ स्लोप विंड को हमें कहूचे. दैट कॉज्ड बाय व्हाट ना हीटिंग ऑफ द माउंटेन स्लोप. क्लियर. and केबे सुनिछ कि व्हाट इज द कैटाबेटिक विंड? एनाबेटिक कैटाबेटिक विंड आपण माने जानि संती. that is also the night time down slope cold wind. ताको हमें कोन कहि परिबा ना डाउन स्लोप कोन डाउन स्लोप विंड. डाउन स्लोप एटा आपनकर कोल्ड विंड आसीजो, एटा पूरा आपनकर कोल्ड विंड आसीजो. Clear? That is the catabatic wind. चलो next question मत आंसर दियो. Which of the following is a cold local wind? या भितर मते को cold पचारिछि and local भी पचारिछि. तो which of the following is the cold local wind? Quick.
लू हेले आमे जानिचे दैट इज नॉट एट ऑल कोल्ड एटा आपनकर कोन हॉट आसीबो एंड ड्राई भी आसीबो hot and dry conditions रे आमे कहि परिबा that is the loo and that is blows in the northwest India during the summer season कोन नै मते को then रहिला आपनकर कोन ना that is the fohn मते कहला ए fohn माने कोन that is a very warm and dry wind को आमे कहि परिबा that is blows on the leeward side of the Alps alpine region रे आपण मानकर देखा साइड so that is what now warm and dry wind warm and dry and what do you mean by the mistral mistral kon kahichi this one is the cold and the dry wind so right answer dekho option C very good so mistral kon kahila this is the cold and the dry wind and this blows from the alpine region to the Mediterranean Sea and it occurs mainly को जगह रे हुए मते कुह ना एटा आपनकर फ्रांस रे देखिबा को मिले क्लियर चिन्नुक कथा कहि देछि मते कहला चिन्नुक त आपनकर हेलीकॉप्टर हे गला छाड़ चिन्नुक कथा कहिछि that is not helicopter actually but RLBS tested helicopter in India that is the Chinook छाड़ दियो तो चिन्नुक कहिछि कोन that is the warm wind that is कोन स्नो को जगह रे ताको स्नो ईटर बोली भी कुहा जाय because warm wind आसीओ माने से तो obviously आपनकर कहा को ना स्नो को पिघलै दबो सो याकू स्नो ईटर बोली भी कुहा जाय स्नो ईटर बोली याकू कुहा जाय क्लियर रॉकी माउंटेन्स यस चलो नेक्स्ट मते कुआ द स्नो ईटर आसा wind found on the eastern slope of the Rockies is the तार ना कोन पचरिछि क्विकली कुह एबे कहि परिबा आई थिंक नो मोर ड्रामास राइट आंसर डायरेक्ट दियो एक्सप्लेनेशन भी मु देबी डायरेक्ट आंसर दियो सो द स्नो ईटर कहा को हमें कहिले एबे ही कहिली कहा को कहिले स्नो ईटर बोली ऑप्शन बी सिन्नुकु ही हमें कहिले दैट इज द स्नो ईटर बोली क्लियर एंड व्हाट डू यू मीन बाय द हर्मटन ए हर्मटन माने कोन केबे अगरु सुनिचो जते बेले हॉट ड्राई डस्टी विंड आपनकर आसी जाए दैट मींस सहारा मरुभूमि रे जोटा आसीबो सहारा मरुभूमि रे आसीबो थर मरुभूमि रे आसीबो ताकू हमें कहि परिबा दैट इज द हर्मटन दैट मींस दैट इज हॉट आसीबो ड्राई आसीबो एंड डस्टी विंड्स clear and mate kahilo what do you mean by the sirocco have you ever heard the word of sirocco sirocco mane ke agulu sunithilo or very new that is only the hot wind not the dusty mane jete dust add hei nathibo jota ki tools like Mediterranean slope re apan kar asibo only hot winds of कोठी ना सहारा मरुभूमि रो जते बेले ओनली हॉट विंड्स आसीबो ताकू हमें कहिबा दैट इज व्हाट ना सिरोको हैना ओनली हॉट विंड्स आसीले देन बोरा कहले कोन ना दैट इज द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स जोटा कि आपनकर एड्रियाटिक कोस्ट रो आसे बोरा आपनकर एड्रियाटिक कोस्ट रो आसे एंड आमे ताकू कोन कहूचे ना दैट इज अ वेरी कोल्ड एंड ड्राई विंड है ना आज पूरा पवन पवन करिकी तमनको पवन रे उड़ी देला हला लागतो ना आसो so again तमनको कहूची those students are preparing for the TGT or the ZT price has been dropped here 1299 and 999 respectively okay flood ready Ranjan Babu what are you talking about aso the seasonal reversal of wind direction is the primary characteristics of मते कहलो what will be the right answer जल्दी the periodical change कथा पचारिछि the seasonal reversal कथा पचारिछि तो the seasonal reversal of wind direction is the primary characteristics of what देखो planetary winds कोन ना these are the permanent winds कोन नै को because both
दो आउट हमें कहि परिबा इन द ईयर इट इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन आपण एग्जांपल नै परिबे ट्रेड विंड्स रो दिस इज अ प्लैनेटरी विंड्स दैट मींस ये आपनकर फिक्स्ड हे कि थाए थ्रू आउट द ईयर आपनकर वेस्टर्लीज हैला these are the fixed one the polar easterlies हैला these are also the fixed one so right answer इठी कोन planetary winds हबनी because these are the fixed one then आसिला कोन ना local winds को हमें कंसीडर करि परिबा कि yes or no मत आंसर दियो that is very short duration winds ताकू भी त हमें करि परिबा नाही but हमें monsoon को करि परिबा इठी clear because monsoon ही आपनकर seasonal and periodic winds लेके आसे and हमें कहूचे complete reversal of wind and तार direction कोसे देखा जाए ना summer monsoon रे आपनकर sea to land winter monsoon land to sea so these are the reversal of the winds which can occur in the periodic which are occur in the seasonal okay तो आको हमें relate करि परिबा आराम से बाकी jet stream already आपण माने जानि चंती jet stream कहिले already आपण माने जानि संती that is the narrow bands of the fast moving winds ताको हमें कहूचे jet streams that is flow at where at a very high altitude very high altitude रे ये देखा से clear next चलो तो मते को winds blowing from the polar high to the subpolar low are जल्दी को winds blowing from the polar high to the subpolar low are called what quick कौन कहूचो yes ma'am जानी छु अमित कुमार निद भांगिला अमित कुमार निद भांगिला आसा तो राइट आंसर कौन कहूचो गोटे मिनिट यार आंसर दियो आसा so winds blowing from the polar high to the subpolar low are polar high to the subpolar low तमन को कौन कहिची quick westerlies तो बिल्कुल नुआ westerlies तमन को कौन कहिची sub tropical high to the subpolar low हन नै को तो एठी आपण मन को कौन कहबो ऑप्शन सी that is the polar easterlies कौन होची ना polar easterlies को हमें कहूचे that is the polar the originated from the polar high pressure belts of almost हमें कहि परिबा 90 degree to blow towards the subpolar low pressure belt of course about the 60 degree तो 90 to 60 को जते बेला आसुची that is हमें कहि परिबा कोन ना आपनकर polar easterlies बोली क्लियर चलो नेक्स्ट तो दिस वन आपण माने देखि पारुथिबे सब पोलर लो रे वेस्टर्लीज आसुची इवन आपनकर सब ट्रॉपिकल हाई रे भी वेस्टर्लीज आसुची देन आपनकर बिटवीन द इक्वेटोरियल एंड सब ट्रॉपिकल आपनकर ट्रेड्स आसी जाउछन हैला नेक्स्ट मते को व्हाट इंस्ट्रूमेंट मेजर्स विंड स्पीड व्हाट इंस्ट्रूमेंट को इंस्ट्रूमेंट आपन को कहितली विंड रो स्पीड को आपनकर मेजर करिवो बारोमीटर कोन कहितली एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपनकर atmospheric pressure wind vane आपनकर कोथि पई wind रो डायरेक्शन जानिबा लागि wind vane okay to know the direction of wind that is बाकी रहिला आपनकर one and only anemometer and psychrometer भी कहितली तमन को गोटे wind रो speed हमें anemometer रे मापुचे that is most common in the cup anemometer बट तमन को साइक्रोमीटर भी कहिथिली कोथि पई ना ह्यूमिडिटी मेजर करबा लागि ह्यूमिडिटी मेजर करबा लागि साइक्रोमीटर तमन को कहिथिली हाइग्रोमीटर आपनकर टाइप्स थिला ओके यस चलो क्लियर नेक्स्ट मते कुह jet streams are found in the mesosphere jet streams quick jet streams are found in को जगह रे देखा जाए कोनती मेजर करा जाए quick are found in mesosphere upper troposphere ionosphere or exosphere
जेट स्ट्रीम आसला माने मेजोस्फीयर तो बिल्कुल हबनी मेजोस्फीयर आपण मान जानि सकते दैट इज द लेयर अबव द स्ट्राटोस्फीयर जोठी आपण मानकर मेटियोर्स माने उल्कापात हुए क्लियर देन आपण मानकर ऑप्शन कोन आसला अपर ट्रापोस्फीयर तो यस 8 ରୁ 15 किलोमीटर भितरे 8 ରୁ 15 किलोमीटर भितरे आपण मानकर अपर ट्रापोस्फीयर देखा जाए दैट इज द मेरी हमें कहि परिबा बट एट वेरी हाई स्पीड रे आपण को देखा जाए 200 टू 400 किलोमीटर पर आवर ये देखा जाए हैला चलो नेक्स्ट मते को वैली ब्रिजेस occurs because of what quick mountain tops cool faster at night valley floors heat up faster during the day air on slopes heat up faster during the day high pressure forms at the peak during the day कौन हबो राइट आंसर quick valley breezes occurs because why a mountain tops cool faster at night this cause meant कोन mountain breeze not the valley breeze एटा आपनकर mountain breeze पळेबो तो valley breeze आसला माने कोन कहि परिबा obviously आपनकर valley related हेथिबो that means valley नुह that means air on slopes heat up faster during the day ताकू हमें c b नाही रे b नाही c को हमें कहिबा कोन during the day time आपनकर हेथे mountain slopes receives more कोन ना डायरेक्ट सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम सो डे टाइम ही तो से हीट हबो हीट हैला फल रे तो आपनकर एयर फ्लो हबो ओके नेक्स्ट चलो मते को द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर आपनकर एयर रे प्रेजेंट रुहे ताको हमें कोन कहूचे इज दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज दैट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज दैट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज दैट मिक्सिंग रेशियो कौन कहबा हम एटा को क्विकली कह देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल हबनी बिकॉज़ ये आपनकर रेशियो करबो केति के वाटर प्रेजेंट अछि इट शोज द रेशियो बिटवीन दैट और नाइ को द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present and the maximum amount of air can hold at given temperature that can told about the relative humidity but the specific humidity कौन कहि परिबो क्विकली को मते ना ये डिफाइन करिबो the weight of water vapor per unit the weight of air like air weight को नेकी water vapor केते कैरी करूची सेटा specific humidity कहिबो और नहीं मते को सपोज हमें कहि परिबा दैट एक्सप्रेस द ग्राम्स पर किलोग्राम रे आपनकर एक्सप्रेस करबा तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हमें कोन कहि परिबा दैट इज द एक्चुअल ऑफ कोन केति के वाटर वेपर प्रेजेंट रहूची ताकू हमर कहि परिबा द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड व्हाट ना दैट इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन मते को व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी पई तो मन को कोन कहि दिली कोटा हबो सुशील कुमार दास कोटा सी हबो रे बाबा यार आंसर दियो मते लास्ट को मु को चेक करू छ हैला मते कुओ व्हिच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी बारोमीटर हेले एटमॉस्फेरिक प्रेशर त माने को कहिथिली ह्यूमिडिटी हेले हाइग्रोमीटर टू टाइप्स रो कहिथिली हेयर हाइग्रोमीटर एंड आपनकर आ गोटे कोन साइक्रोमीटर सो इथि वन एंड ओनली हाइग्रोमीटर क्लियर नेक्स्ट मते को रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपन को एबे कहिथिली रिलेटिव ह्यूमिडिटी एबे कहिथिली कोथरे एक्सप्रेस करा जाय ग्राम्स रे तो बिल्कुल नुह मिलीबार्स रे भी नुह मिलीबार रे आपन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करे बट हियर वी कैन से इन द परसेंटेज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी कौन इज इन द परसेंटेज रेशियो ऑफ एक्चुअल मॉइस्चर प्रेजेंट टू मैक्सिमम मॉइस्चर एयर कैन होल्ड एट दैट टेंपरेचर सो एग्जांपल हमें नहीं परिबे द RH okay 50% of air holds कोन half of its moisture capacity so that's why हमें कहि परिबा that is the percentage रे हमें शो करू छ absolute humidity हबो C बोली कहिली मैम पूरा अच्छा ठीक अछि नो प्रॉब्लम आसो so next मते को when relative humidity reaches 100% the air is said to be जते बेले relative humidity आपनकर 100% पर्यंत रीच करिवो then हमें कोन कहि परिबा ना the air is dry saturated आपनकर rarefied or the condensed कोन बोली कहिबा ताको हमें को जल्दी ड्राई तो हमें बिल्कुल कहिबानी सैचुरेटेड भी बिल्कुल कहिबा नाही सैचुरेटेड कहि परिबा ना सैचुरेटेड कहि परिबा को सो 100% जेले हे जिवो तो सैचुरेशन लेवल आपनकर क्रॉस हे जिवो इट होल्ड्स द मैक्सिमम पॉसिबल मॉइस्चर दैट मींस that is the saturated one any further cooling causes the condensation
तापर जदि से कूल डाउन हे जिवो ताको हमें कहबा कंडेंसेशन तो सैचुरेटेड एयर लीड्स टू व्हाट ना ड्यू फॉग क्लाउड्स रेनफॉल चारटा जिंस आपनकर से लीड करे एति जिंस मन रही परिबो क्लियर वेरी गुड तो सैचुरेशन मींस आपनकर कोन आसीबो ना आरएच 100% as clear as it clear next chala mate ko the temperature at which saturation occurs the temperature at which saturation occurs at condensation begins is there boiling point freezing point dew point critical point चारिटा जिंस कहिथिली को माने कहि परिबो boiling point हेले हम जानि छे temperature at which liquid changes to gas कोन liquid changes to gas ताको हमें कहिबा that is the boiling point लिक्विड आपनकर कोन हेसिबो ना गैस हेसिबो क्लियर तो फ्रीजिंग पॉइंट हमें कोन कहूचे ना जते बेले 0 डिग्री को परे आसीबो जते बेले आपनकर टेंपरेचर एट व्हिच लिक्विड वाटर फ्रीजेस या फिर हमें कहि परिबा दैट इज 0 डिग्री बट द ड्यू पॉइंट को हमें कोन कहि परिबा ना कंडेंसेशन इट begins with the dew point is the temperature at which air becomes saturated the further cooling leads to the condensation कोन आपनकर ड्यू फॉग फ्रो आपनकर फ्रॉस्ट हैला रेन हैला ए सब जिंस आपनकर आसी जिवो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मते कुह as the temperature of air increases its capacity to hold moisture जदि एयर आपनकर कोन टेंपरेचर ऑफ एयर इंक्रीज होउची देन कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर कोन हबो आपनकर क्विक as the temperature of air increases its capacity to hold the moisture ये कोन डिक्रीज हबो कि बिल्कुल नो लिमिटेड एबिलिटी cold air has a limited ability to hold the water vapor so ये तो आपनकर बिल्कुल डिक्रीज हबनी बट ये आपनकर कोन ना इंक्रीज हे पाइबो because we know the water air molecules the warm air molecules आपनकर कोन करे ना फास्टली मूव करे so the faster molecule movement creates more space to the hold water vapor so obviously it आपनकर increase हबो because water vapor capacity बढ़िबो okay moisture decrease हबो a केमिति हबो C option B as the temperature of air increases its capacity to hold the moisture increase हबो जदि टेंपरेचर इंक्रीज हबो त कैपेसिटी तो ऑब्वियसली इंक्रीज हबो ना टेंपरेचर जते बेले आपनकर कोन 30 डिग्री 40 डिग्री हे जाउची सेते बेले आपनकर अधिक वेपराइजेशन होउनी की वेपराइजेशन अधिक होउनी की या फिर वेपराइजेशन कमी जाउची वेपराइजेशन अधिक होई कि वेपर गुडा कुआडे जाउची पानीटा आपनको ऊपर को जाई कि सेटा तो वाटर आपनकर एयर रे ही रहउची ना तो तारा कंटेनिंग कैपेसिटी तो बढ़ुची ना केमिति कमिबो मते बुझा the warm air is the high moisture capacity the cold air has the low moisture capacity बुझो क्वेश्चन टिके ट्रैक माने टैक्टफुल अछि ताकि टिके ट्राई करो बुझिबा पई दिस इज व्हाई हमें कहूचे जते बेले आपन करो हां वेपराइजेशन अधिक हो बसिया त कहूची आपन माने भाबंतु द डेजर्ट्स रे आपन करो जते बेले डेजर्ट्स कथा आपन माने नउचंद एग्जांपल मरुभूमि रे can have the high temperature but low rainfall हुए ना नहीं अपन कर कुआ और नहीं मते कुआ because condensation occurs when warm air cools और नहीं तो warm जते बेले अपन कर air warm हे चली थी बताले अपन कर cool down हबो केमती कुआ चलो next question which form of condensation occurs near the ground reducing the visibility quick मैम एसएसबी टीजीटी आर्ट्स बैच रे केमिति जॉइन हेबी 9124730510 एटा मोर व्हाट्सएप नंबर मते एठी मेसेज करि दियो तमन ना एंड को बैच रे जॉइन हेबा को चाहू छ मु कॉल अरेंज करि देबे तुमे जॉइन हे छ ठीक अछि प्रधान फैमिली लाइफस्टाइल आसो तो मते को which form of condensation occurs near the ground reducing visibility quickly कुहा सेम रहिबो कि the cloud fog frost or hail कोन हबो राइट आंसर क्विकली कुहा clouds आपनकर हबो कि not at all because clouds forms above the ground level so एठी कोन पचारि छी ना near the ground level पचारि छी near the ground level कहिले हमें कोन कहि परिबा
ना ऑब्वियसली पाखा पाखी आसिले आपनकर कोन ना फॉग पूरा कुहुडी छाई जाउची आपण माने रास्ता देखि पारु नाहंती सो एटा आपनकर विंटर मॉर्निंग्स रे आपनकर सब बेले देखा जाय कोस्टल एरियाज रे बेसी देखा जाय इवन दो नियर द वैली आल्सो क्लियर चल Next mate kuha humidity that refers to the weight of water vapor per unit weight for of air is कौन कुहा जीवो ताकू हमें सुशील यार आंसर दियो टिके जल्दी देखो जल्दी ना humidity defined as weight of water vapor per unit water देखो absolute humidity हबनी because we know the weight of water vapor per unit volume of air expressed in what ना in gram per cubic meter कौन ताकू हमें एमिति से ग्राम पर क्यूबिक मीटर हमें ताकू डिनोट करू छे और नहीं कुआ सो राइट आंसर यार कोन हबो रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी तो हबनी राइट आंसर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहिथिली चारटा तक ह्यूमिडिटी त माने को कहिथिली स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपनकर कोउथरे जीवो ना ग्राम पर किलोग्राम रे जीवो तो weight of the water vapor per unit weight of air weight केते अछि ताको हमें स्पेसिफिकली मेंशन करि परिबा that is expressed in the grams per kilogram b कोथि पई b हबो रिलेटिव हबो कोथि पई देखो केमिति b हबो मते टिके कुह रिलेटिव ह्यूमिडिटी केमिति हबो टिके मते कुह मु जदी कहूची स्पेसिफिक त माने काई ताको रिलेटिव करूचो रिलेटिव रो काम कोन से रेशियो बतेबो आपनकू कि एक्चुअल मॉइस्चर कैपेसिटी केते आपनकर मैक्सिमम कैपेसिटी केते सेते मॉइस्चर कंटेंट केते अछि सो रिस्पेक्ट टू द मॉइस्चर कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी सेटा आपनकर रेशियो आपनको कहबो दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी बट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपनको स्पेसिफिकली केते परसेंट कंपेयर करी कि कहबो तो वेट केते कैरी करि परिबो सेटा स्पेसिफिक बुझियला चल डाउट नहीं तो मते को रेनफॉल caused by the upward movement of air when it strikes mountain is quickly कहिला एटा जल्दी मते को रेनफॉल caused by air rising over the mountains ताको हमें कोन कहि परिबा देखो फर्स्ट ऑप्शन अछि कोन ना कन्वेक्शनल रेनफॉल तो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहिले हमें कोन कहउचे ना दैट caused during the surface heating सरफेस जते बेले हीट हबो ता परे आपनकर एटा आसीबो दैट मींस एटा आपनकर कोठी ना इक्वेटोरियल रीजन रे एटा आपनकर कॉमन हेसिबो तो साइक्लोनिक रेनफॉल आपनकर केबे आसीबो मते क्विक साइक्लोनिक रेनफॉल आपनकर केबे आसीबो ना दैट occurs due to the cyclonic or the cyclones and the low pressure system that is very common in the temperate regions but एठी आपनकर देखिछि गोटे वर्ड orographic rainfall ताको हमें कौन कहउचे ना also we know that as a relief rainfall the orographic rainfall is also called as the relief rainfall that occurs when the moisture air strikes a mountain और नहीं मते को clear so that force to rise जते बेले force आपनकर rise हबो सेते बेले आपनकर cool हबो air condense हबो air rainfall आपनकर आसीबो so wind ର speed आपनकर कोडी के हबो ना deal करिवो with the heavy rainfall आपनकर leeward side that is rain shadow area ए सब को रिलेट करे क्लियर चलो नेक्स्ट एटा देखो एठी जो अछि फ्रंटल रेनफॉल दैट मींस कोन जानछो जेते बेरे warm air and cold air meet करंती when warm air meet with cold air so that situation को हमें कहूचे that is the frontal rainfall आसी जाए हैला नेक्स्ट चलो मते को हाई लेवल क्लाउड्स दैट लुक लाइक wisps of hair of feathers or coat ताको हमें कोन कहि परिबा जल्दी को हाई लेवल क्लाउड्स resembling the feathers of hair ताको हमें कोन कहूचे that is cumulus that is stratus that is cirrus that is nimbus कोन कहि परिबा what do you mean by cumulus having any idea जेते बेले फॉफी आपण माने देखुथबे कटन लाइक क्लाउड्स आसे माने क्लाउड्स रा देखुथबे एमिति बंच बंच हेकि बुलुथबे आपण माने देखले लागुथबो कोन ना एमिति कटन माने कटन को पाउच भले रखिला भले लागुथबो जेते कि एयर रो माने कोन वेदर को डिनोट करबो कि ठीक ठाक वेदर अछि
माने जस्ट पूरा वेदर क्लीन एंड कंपोज थिबो बट ऑल ऑफ सडन आपन कर कोन ना गोटे टाइप रो देखा जिवो गोटे गोटे जगह रे क्लाउड फॉर्मेशन पूरा एमती बंच हेकी देखा जिवो लागु तो जेमती हाथ रे आपन माने धरि पकेबे सेटा को हमें कोन कहि परिबा ना एटा थिला क्यूमुलस ठीक अछि गेस कलो एमिति भूलभाल गेस करनी हैला ताकू हमें क्यूमुलस कहूचे तो एठी मु लिखि दोची कटन लाइक क्लाउड आपण माने जानि देबे कि मु कोटा कहितिली ताकू दैट वाज अ वेरी कोन पफी एंड कटन लाइक क्लाउड्स हैला देन रहिला स्ट्रैटस तो स्ट्रैटस को हमें कोन कहि परिबा को ना दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्लाउड आपण मानकु जानिबा दरकार क्लाउड रो भी डिफरेंट लेवल अछि the low level that means the uniform cloud cover जोटा कि हमें नॉर्मली देखुचे यूनिफॉर्मली जेटा कि आपन को ड्रिजल कॉज करूची कोन करूची ना ड्रिजल माने बहुत ही धीरे धीरे आपन को वर्षा पड़े जो कहंदिनी कि पूरा ग्लूम वर्षा होची पूरा माने बहुत ही सरू सरू ओदा भी कही हेबेनी सेही वाला क्लाउड फॉर्मेशन यूनिफॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन को हमें कहूची स्ट्रैटस देन रहूची आपन को राइट आंसर कोन दैट इज द cirrus that is a high level cloud above 6 kilometer कोन ना बहुत जोरे जो कोंदी वृष्टिपात होउची पूरा वर्षा तो नुआ आज वृष्टिपात होउची आपण कोहन तो हमें सुनिबो नो आईडिया अच्छा ओके संतोषिनी अच्छा तो हाई लेवल क्लाउड्स को हमें कहबा दैट इज अबव 6 किलोमीटर आपण कर हुए ताको हमें कहूचे कोन ना दैट इज द cirrus क्लियर आपण कर जो कहू हमें वेरी थिन गोटे व्हिस्पी टाइप रो साउंड होय जते बेले वर्षा हुए द फीदर लाइक आपण कर पूरा टोटल ता कोन बादल बादल थिबो एंड जो निम्बस अछि जोटा आपण कोली कला हंडिया मेघ आसे कला हंडिया मेघ ताकू हमें कहूचे दैट इज द निम्बस एटा मन हैला क्लियर मैम बीएड पाई क्लास करंतु एसके सत्यभामा परिबा हैला तो हियर इज द राइट आंसर cirrus cloud सी दिस इज द cirrus cloud माने फुल पूरा आकाश सारा व्हाइट व्हाइट मेघ थिबो बट जदी ब्लैक मेघ हे गला ताको हमें निम्बस कहिबे हैला तो अगेन कहूची जो माने टीजीटी एंड जेटी पाई प्रिपरेशन करूछंदी प्राइस ड्रॉप ही जाईची 1299 and 999 respectively so do not delay just grab the offer right away thank you so much have a good day take care of yourself but before that तमन को कहि दोची जदि वन डे एग्जामिनेशन पाई आपण माने प्रिपेयर करछंदी महाप्या को नियंतु जहार वैलिडिटी रहउची 2 इयर्स भीतर जते वन डे एग्जामिनेशन आसीबो ए सब एग्जामिनेशन या अंडर रे कवर अप हेसी apart from that जदि सिविल सर्विस पाई आपण माने प्रिपेयर करछंदी मु आपण कर साइंस एंड टेक पर्सन ईवीएस पर्सन एंड आपण को डिजास्टर मैनेजमेंट पर्सन भी कवर अप करछि तो आपण माने नै परिबे सेठी ओसीएस प्री ओनली 5499 हे जायछि प्री प्लस मेंस 9999 हे जायछि ऑप्शनल बैच यू कैन enroll with the least amount 3999 so that's it thank you so much have a good day take care of yourself but first of all do prioritize your parents this would be your first priority no one else in the world thank you so much खत्म हे गला माने खत्म करना थांदी आहुरी बढ़े थांदी 10 हे गला पा 1 hour क्लास सॉरी गला देन अगेन देखा हबो आई थिंक ट्यूसडे मोर ला पुनी नेक्स्ट क्लास अछि ट्यूसडे ओके till then take care of yourself bye bye jai jagannatha